started framing the Indian Constitution after the Cabinet Mission Plan 1946. Okay, don't worry about the mission plans. History में सब रट लोगे because you have not done history. Therefore, probably you do not remember or you do not know about the plans. So 46 में we had the Cabinet Mission and it proposed कि ठीक है इंडिया का अपना एक Constitution होगा. And India started framing the Indian Constitution, and it talked about 3 types of states A, B, C. Okay. Now, in 1946, the Constituent Assembly was created. These are all very factual information, which you will find it in Lakshmikant also. And questions UPSC से as such तो नहीं बनते हैं, but कभी आप expect कर सकते हो कि statement देकर आ जाए, right? कि कितनी प्रोविंसेस थी, इस तरह से कभी कोई स्टेटमेंट टकरा सकता है. सो यू शुड नो इट. ओके, सो वन वाज द ब्रिटिश स्टेट, प्रोविंसेस स्टेट, ठीक, प्रोविंशियल स्टेट्स लाइक दैट. इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ 1 मेंबर पर मिलियन पॉपुलेशन कि हम इतने रिप्रेजेंटेटिव्स को रखेंगे. बट फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स द मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द किंग्स. ठीक. Then smaller princely states could not nominate because of the lesser population, because you need to have at least 1 million population to have 1 member. So जिनके पास उतना नहीं था, they could not nominate. You can see the Constituent Assembly. So provinces से आपको दिख रहे हैं 292 plus 4, that is 296 members, and princely states जो भी थे वो आफ्टर द पार्टीशन उनको रिमूव किया. तो इस तरह से डोंट वरी अबाउट द नंबर्स एज सच. सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th December. द डेट बिकम्स इंपॉर्टेंट. 46 में पहली मीटिंग हो रही है. फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज meeting for the first time. Sachidanand Sinha, very important name. He was the interim president, and interim means for the time being उनको elect किया गया. And बाद में तो आप सबको पता है who was the elected president. It was Dr. Rajendra Prasad. And the one leader who is known, who is responsible, जो objectives resolution को लेकर आए, जिन्होंने पास किया, it was पंडित जवाहरलाल नेहरू. Yes. Yes, princely states वही है. Now the drafting committee of the 7 members was set up, headed by Dr. Ambedkar. ठीक. Drafting committee के chairman भी कौन थे? We know it was B.R. Ambedkar. And the Constituent Assembly had 13 different committees, and Constituent Assembly was there for 2 years. हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूएंट कितने टाइम में बन के तैयार हुआ था. ये बिल्कुल रटा रहना चाहिए. इट्स 2.11.18, ऐसा याद रखो. 2 years 11 months and 18 days. Constitution finally was adopted on 26th of November 1949. And it became effective on 26th of January 1946 to celebrate the Purna Swaraj. So the last meeting was held on 24th of January 1947. Okay, और 26th को आपने उसको पूरी तरह से इफेक्ट 1950 में, remember, to elect Dr. Rajendra Prasad as the first president of India. Objectives resolution क्या है? So objectives is, जैसे मैंने बताया, किसी भी बुक का, किसी भी नॉवल का एक प्रीफेस होता है that tells you what the book is about. तो मतलब उस बुक की फिलॉसफी, उस बुक का सोल समझिए कि कहाँ कंटेंट है, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा. अगर आपको प्रीफेस समझ आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि ठीक है, द बुक टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर डोमेन, है ना. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही है जिसको हमने प्रियम्बल में की फॉर्म में फिर अडॉप्ट किया है. सो इट मस्ट, एनी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव अ फिलोसॉफिकल बेस रिफ्लेक्टिंग द नेशंस ethos and the vision of its leaders past and present.
And the philosophy underlying the Indian Constitution was embodied quite early in the objective resolution, which was moved in the first session of the Constituent Assembly on December 13, 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted after considerable debate and deliberation on 22nd of January 1947. अब ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में क्या कुछ मेंशन्ड है, वही बेसिक आइडियाज to foster unity of nation, to ensure the economic and political security, to have a federal form of government, to guarantee and secure justice, right? To provide adequate safeguards. You can read it. अब Constituent Assembly का criticism. What were the drawbacks in the formation or in the constitution? The way Constituent Assembly was formed. तो देखिए, सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये है, जैसे हमने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, उधर के जो मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट किया गया, ठीक. दूसरा, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब इसको क्रिटिसाइज करके करते ही नहीं रहना है. देयर वर मेनी रीजंस. डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने की हालत में भी हम थे या नहीं, ठीक है. सो इवन इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन ओनली 28% ऑफ द पीपल हैड वोटिंग राइट्स. अब जो प्रोविंशियल में जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे वोट देने भी कितने एलिजिबल लोग पहुंच रहे हैं? 28%, है ना. मतलब जो 28 इज अगेन अ माइनॉरिटी, है ना, मेजॉरिटी को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है. बट द फैक्ट इज इवन इफ द डायरेक्ट इलेक्शन वर हेल्ड द रिजल्ट वुडंट बी वेरी मच डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि अगर हम इलेक्शंस कराते तो रिजल्ट क्या है, एकदम तख्ता पलट हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे पार्टी भी कौन थी? कांग्रेस. डोमिनेंस था कांग्रेस का और वही लीडर्स थे. द कॉम्पोजिशन मोर और लेस वुड हैव रिमेन्ड द सेम. ऐसा नहीं है कि डे नाइट या ऑपोजिट जितना चेंज कुछ आ जाता, राइट. सो इवन द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड. Another critic was that it was Congress nominated. So even all the non-Congress members were elected on the Congress ticket only. Now इसके examples जैसे यहाँ पर दिया है, अंबेडकर, एसपी मुखर्जी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू. So these were all critics of Congress, but they were given fair share. तो आपने दोनों एंगल्स को, जो डोमिनेटेड पार्ट है कांग्रेस का वो तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हो, बट जो क्रिटिक्स हैं, जो ऑपोजिशन है, they are also being represented and they are also being given a fair share in the Constituent Assembly. So all our contemporary countries who got independence failed, but Indian Constitution did not because of the following reason. ठीक, हमने देखा है कि how Britishers used to say that India is nothing more than a geographical expression. This is how the Britishers used to define India, कि सिर्फ एक geography है यहाँ से यहाँ तक इंडिया. There is no feeling of Indianness. लोगों को पता ही नहीं है इंडिया क्या है, बस उनको टेरिटरी पता है कि हाँ ये इंडिया है. ऐसे माइंडसेट के बावजूद और बाकी कंट्रीज जिन्होंने हमारे साथ इंडिपेंडेंस लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंक्लूसिव नेचर. मतलब हमने सबको इंक्लूड किया है. माइनॉरिटीज के राइट्स को, माइनॉरिटीज के डिमांड्स को, उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी that share has been given to them. So no imposition on minority over majority or vice versa, right? And the kind of leaders that we had, they all had a very liberal and democratic outlook. For example, Nehru, for example, Patel. So in spite of Hindu majority in the Constituent Assembly,
around 80 out of 299 members were Muslim, where the Muslim population was around 10% of the country. So they were not alienated. Sub minorities का ध्यान रखा गया. And the biggest critics of democracy is that the majority view always wins. We need special provisions to ensure the rights of minorities.